होमवर्क क्या दिया था मैंने? होमवर्क किया है सबने? वीर ओके? यू डोंट अटेंड द डाउट लेक्चर्स? हमारे डाउट्स खत्म हो गए सारे? Why don't you attend the doubt lectures? Arsh, you also had sent doubts on WhatsApp group, but you also didn't attend the doubt lecture. Why didn't you attend the doubt lecture? Okay, regular lecture is for discussion of only the homework that I gave in the lectures. Okay, other doubts we'll discuss in the doubt lecture. You should attend the doubt lectures. होमवर्क दिया था मैंने FBO up to 62 और FBS except question number 43 to 52. FBO के डाउट्स कर लेते हैं पहले. 1 second. डाउट्स बोलो, कोई डाउट है FBO में? FBO क्वेश्चन नंबर 58. I think this is lecture 14 na? Lecture 13. Question number 58. FBO doubts.
2.4 kg of carbon is made to react with 1.35 kg of aluminium to form Al4C3. The maximum amount in kg of aluminium carbide formed. So aluminium plus carbon forming aluminium carbide. Let us balance the reaction. This is 4Al plus 3C giving aluminium carbide. Okay. Carbon is 2.4 kg and aluminium is 1.35 kg. So let us find their moles. Okay. Moles of carbon will be mass of carbon upon its molar mass. 2.4 kg upon 12 grams. 2400 upon 12 is equal to 200. So carbon के moles 200 आ गए. Moles of aluminium, let us find out. Okay. Moles of aluminium, if you find, moles of aluminium is 1.35 kg upon 27 upon 27 grams or 1350 upon 27. then ये 50 moles आ जाएंगे. ठीक है. तो एल्यूमिनियम के मोल्स हैं 50 और कार्बन के मोल से 200. किसी भी रिएक्शन में अगर दोनों रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है, दो रिएक्टेंट्स का अमाउंट्स गिवन है एंड द मोल रेशियो इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, देन वी अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट अप्लाई होगा. विल अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. आई थिंक कर पाओगे अभी. वन सेकेंड. नेक्स्ट डाउट बोलो. लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट अगर अप्लाई करेंगे तो लिमिटिंग रीजन क्या आएगा यहाँ पर. एल्यूमिनियम के लिए विल फाइंड आउट मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 50 by 4 12.5. कार्बन के लिए विल फाइंड आउट मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 200 by 3 66.67, which is the smaller number. So aluminium is the limiting reagent. Now in terms of x, we'll write 50 minus 4x. This is 200 minus 3x. This will be x. We'll equate limiting reagent to 0. Limiting reagent को 0 equate करोगे, x की value find out करेंगे. x is equal to 12.5. तो aluminium carbide formed is 12.5. ठीक है. अगर निकालना क्या है, mass of aluminium carbide. मास ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड निकालेंगे. इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास. मोल्स है 12.5, मोलर मास आएगा 36 प्लस 108 इज 144. ठीक है. 144 इंटू 12.5 1800 ग्राम्स आ गया. 1.8 kg.
ठीक है, एनी अदर डाउट? एफबीओ में और कोई डाउट है? ठीक है, एफबीएस में कोई डाउट? वीरो के एफबीएस का 39 क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? एफबीएस क्वेश्चन नंबर 39, एफबीएस क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस करने दो मुझे। एफबीएस क्वेश्चन नंबर 39। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, करा देता हूं मैं। लेट मी सॉल्व एफबीएस क्वेश्चन नंबर 39। दिस इज CH3 whole X AlClY, ठीक है, प्लस दिस विल गिव XCH4 प्लस YCl माइनस प्लस Al3 प्लस। इसमें Cl माइनस से AgNO3 रिएक्ट करेगा, इट विल गिव 0.996 grams of AgCl। और किसका किसका मास दिया हुआ है? CH4 का मास दिया हुआ है 0.22 ग्राम्स, ठीक है, और इसका मास दिया हुआ है 0.643 ग्राम्स। एक काम करते हैं, ठीक है, हम इसके मोल्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट इसके मोल्स हैं ए, ठीक है। कार्बन एटम्स कंजर्व करो, जितने कार्बन एटम्स रिएक्टेंट में उतने कार्बन एटम्स प्रोडक्ट में है, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? AX। क्लोराइड के मोल्स कितने आ जाएंगे? AY। AgCl के मोल्स कितने आ जाएंगे? AY। ये वाला क्लियर है? इसके बाद फिर सॉल्व कर देंगे बस। तो इसके बाद हम क्या क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल टू AY, and moles of AgCl will be mass upon its molar mass। AgCl का मास दिया हुआ है 0.996, AgCl का मोलर मास निकालेंगे 143.5 इज इक्वल टू AY। A और Y में एक इक्वेशन मिल गया, ठीक। और क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू AX। यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.222 CH4 का मास
अपॉन 16 इज इक्वल टू ax, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को डिवाइड करके x और y का एक रेशियो आ जाएगा। If you divide this, we get 0.996 upon 0.222 into 16 by 143.5 is equal to y by x। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.999 is approximately 2, तो x by y is 2। ठीक है, अभी इसके बाद लास्ट इक्वेशन लिखेंगे। मोल्स ऑफ CH3 whole x AlCl is equal to A। अभी 0.643 अपॉन CH3 whole x। ठीक है, इसमें अभी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। x कैन बी 2, y कैन बी 1। ठीक है, एक्चुअली ऐसे वेरीफाई करेंगे। देखो x टू y इक्वल टू 1 कैसे किया हमने। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 और CH3 पे भी चार्ज होता है -1। ठीक है, तो टोटल चार्ज 0 आना चाहिए। ये x, ये 1, ये y, तो विल गेट -x +3 -y इज इक्वल टू 0। और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, तो -2y +3 -y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। आया समझ में? हाँ, थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट यूज हुआ है, चार्ज का कंसेप्ट यूज हुआ है। विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर्स लेटर ऑन इन अ डिफरेंट चैप्टर। नेक्स्ट डाउट बोलो, FBS का नेक्स्ट डाउट बोलो। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 42 में भी डाउट है, आदित्य पाटिल। By the reaction of carbon and oxygen, a mixture of CO and CO2 is obtained. What is the composition obtained in moles when 20 grams of oxygen react with 12? कराया तो है मैंने यही क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में। 3/4 and 1/4 moles। ये नहीं डिस्कस कर रहा मैं, सेम टू सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 मैंने क्लास में कराया है। When 12 grams of carbon react with 20 grams of oxygen, ठीक है, we get 3/4 moles of CO and 1/4 moles of CO2। देखो दिखाता हूँ मैं ये क्वेश्चन कहाँ कराया मैंने। 12 grams of carbon and 20 grams of oxygen लास्ट लेक्चर में किया ना हमने। moles of CO 3/4 और moles of CO2 1/4।
ठीक है, एनी अदर डाउट? ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू, लेट अस स्टार्ट विथ concentration terms. ठीक है, let us start with concentration terms. Before actually doing concentration terms, we'll study about solution, solute, and solvent. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. Generally, the substance that is present in excess is called the solvent. The other substance is called solute. सॉल्वेंट की सब्सटेंस को बोलेंगे किसी भी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे. The substance that is present in large excess is the solvent. Solute क्या होगा? All other substances present in smaller amounts. Normally, but for a solution of solid in liquid, solid or gas in liquid, for a solution of solid or gas in liquid, solid or gas is always the solute, and
Liquid is always the solvent, irrespective of their amounts, whatever be their amounts. Okay. So for a solution of solid in liquid or a gas in liquid, solid or gas is considered as the solute, liquid is considered as the solvent. Okay. Now we'll talk about what is concentration. Concentration. Concentration of solute in a solution. Normally, when we say concentration, we talk about concentration of solute in a solution. What is concentration? It is a measure of the amount of solute present in a given amount of solvent or solution. Concentration is a measure of the amount of solute present in a given quantity of solution. The per liter solution solute का कितना amount present है, per liter solution solute के कितने moles present है, per liter solution solute का कितना grams present है, या फिर per kg solution solute कितना present है. So concentration is a measure of amount of solute present in a given quantity of solvent or a given quantity of solution. Okay. The quantity of solvent or solution can be measured in moles, can be measured in volume, can be measured in mass. Similarly, the amount of solute present can also be measured in moles, mass, volume, etc. Therefore, we have a number of different units which can be used to express the concentration. And all the different units which are used to express the concentration are called as concentration terms. Okay. So what are concentration terms? Concentration terms are the units for measurement of concentration of a solution. Units for measurement of the amount of solute present in a given amount of solution or the solvent. Okay. Clear है ये? We'll write this definition of concentration term in the next page. ये note कर लो पहले.
नेक्स्ट देखो, we are continuing with mole concept only. We are doing the concentration terms of the mole concept. The different units used for measurement of the concentration of a solution are called concentration terms. Now, one by one, we'll study the different concentration terms. ठीक है, सबसे पहले इसमें we'll talk about molarity, denoted by capital M or moles per liter. Definition is quite simple. It is the number of moles of solute per liter of solution. It is the number of moles of solute per liter of solution. If you write its formula, molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liters, or number of moles of solute upon volume of solution in milliliters into 1000. एग्जाम्पल देखो, $20 grams of NaOH is dissolved in water to get 400 ml solution. Find molarity. Suppose we have 20 grams of NaOH in water to form 400 ml of solution. How to find out the molarity? We'll get molarity as equal to number of moles of solute. तो पहले moles of NaOH निकालेंगे. यहाँ पे अगर moles of NaOH निकालेंगे तो number of moles of NaOH
will be given mass upon molar mass. So 20/40 is equal to कितना आ गया 0.5 or half moles. We'll get molarity is equal to 0.5 upon volume of solution in ml is 400 into 1000. 0.5 into 10/4 is 5/4 is equal to 1.25. Molarity is 1.25. We say that concentration of NaOH is 1.25 molar or 1.25 moles per liter. Symbolically, concentration is denoted by square brackets. NaOH within square bracket represents concentration of NaOH. This is the symbolic representation of concentration. And this is equal to 1.25 m. ठीक है, concentration of NaOH को हम NaOH within square brackets लिखते हैं और molarity को simply 1.25 capital M लिखते हैं. The concentration of NaOH in the above solution is 1.25 molar or 1.25 moles per liter. ठीक है, concentration of a substance can be denoted as symbolically by using square brackets. ठीक है, clear है ये? टर्न करूं पेज? यहाँ से देखो मोलारिटी के रिलेशन से some more results which you can derive. Molarity M into volume of solution in liters is equal to number of moles of solute. Molarity into volume in liters will give the number of moles of solute. ठीक है, और एक रिलेशन लिखेंगे molarity into volume in milliliters is equal to number of moles of solute into 1000. Number of moles into 1000 is number of millimoles of solute. M mole is millimole, and 1 millimole is 10 to the power minus 3 moles. Okay. Molarity into volume in milliliters is number of millimoles of solute. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? Molarity is equal to number of millimoles upon volume of solution in milliliters. So this can also be written as equal to molarity. So molarity is moles per liter और millimoles per milliliter. क्योंकि millimoles per milliliter करेंगे तो मिली कैंसिल हो जाएगा. Finally we'll get moles per liter. So molarity is moles per liter और millimoles per milliliter. क्लियर है ये?
Is this clear? आ रहा है समझ में सबको? कुछ क्वेश्चंस करते हैं. Forty grams of magnesium sulfate is added to prepare 3-liter solution. Is added to water. Three-liter solution. Find its molarity. Forty grams of MgSO4 is added to water to prepare 3-liter solution. Find its molarity. जल्दी करो. 1/9 is correct. Yes, 1/9 is correct. We'll find out the concentration of MgSO4 is equal to its moles. Moles will be mass divided by molar mass. MgSO4 का molar mass आएगा 140 upon the volume of solution in liters. So this comes out to be equal to 1/9 m, which is approximately 0.1111 m. Clear है ये? Is this clear? Run करूं page? आदित्य, ये मोल्स निकाला हमने. दिस इज मोल्स. मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास होता है ना. पहले मोलर मास ऑफ MgSO4 निकालो. मोलर मास ऑफ MgSO4 अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 24 + 32 + 4 × 16. ये 120 आ जाएगा. ठीक है. मास अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे. क्लियर है? नेक्स्ट. What mass of calcium chloride is required to prepare 750 ml of 0.3 molar CaCl2 solution? Try करो. What mass of CaCl2 is required to prepare a 750 ml of 0.3 molar CaCl2 solution?
Hmm, 25 ग्राम्स एक तो इसमें तो मुझे 24.975, approximately 25 grams. 24.975 is correct. Good, good. 999 by 40, हाँ ठीक है. 999 by 40 is correct. Correct, very good. We'll get number of moles of chlorine CaCl2 is equal to molarity into volume in liters. Molarity is 0.3, volume in liters will be 750 by 1000. 3 by 4 is equal to 0.9 by 4 or 9 by 40. Mass आ जाएगा moles into molar mass. Moles 9 by 40, molar mass is 111. 999 by 40 is equal to 24.975 grams. ठीक है, क्लियर है ये? Now let us do the next concentration term. Next concentration term is grams per liter strength. बहुत straightforward है. Grams per liter strength. It is the grams of solute or the mass of solute in grams per liter of solution. ठीक है, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे. grams per liter is equal to mass of solute in grams upon volume of solution in liters. Which is equal to mass of solute in grams upon volume of solution in milliliters into 1000. This is grams per liter strength.
It can also be related to molarity. Grams per liter is simply molarity into molar mass of solute. It is simply molarity into molar mass of solute. Molarity is moles per liter. नंबर ऑफ मोल्स को सोल्यूट के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट ग्राम्स पर लीटर. ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है, ग्राम्स पर लीटर इज ऑलवेज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट. We can use either of these two equations to find out the grams per liter strength. Examples देखो. .4 molar HCl solution. This will be 0.4 into HCl का molar mass 36.5 grams per liter strength. The grams per liter strength is equal to 14.6 आ जाएगा. ठीक है. Suppose it is given that 2 moles of MgCl2 is present in 800 ml water. यहाँ पे ग्राम्स पर लीटर स्ट्रेंथ आ जाएगा. मोल्स इज 2, मोलर मास 2 मोल्स के लिए अगर मोलर मास निकालेंगे तो 2 मोल्स का मोलर मास आएगा. 1 मोल का मास है 24 प्लस 95, तो 2 मोल्स का मास आ जाएगा 2 into 95 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml is 800 into 1000. So 20 by 20 into 95 by 8. 237.5 ग्राम्स पर लीटर. ठीक है, आ रहा है समझ में. प्रीवियस स्लाइड देख लो जल्दी से. नेक्स्ट देखो, दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किया हमने, मोलारिटी और ग्राम्स पर लीटर स्ट्रेंथ. थर्ड देखो, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन.
एक सेकंड रुकना। We have three types of percentages strengths defined. इसमें सबसे पहले लिखो परसेंट बाय मास, और परसेंट वेट बाय वेट। Denote it simply as percentage W by W. It is simply the mass percentage of solute in solution. It is the mass percent of solute in a solution. Okay. So percent weight by weight is simply written as mass of solute upon mass of solution into 100. ठीक है, तो स्ट्रेट अवे जो सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास परसेंट प्रेजेंट है उसको हम परसेंटेज वेट बाय वेट बोलते हैं। Whatever is the mass percentage of solute present in the solution is called as the percentage weight by weight of solution. Fine. नेक्स्ट देखो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। It is defined as it is the mass of solute in grams present in 100 ml solution. Per 100 ml of solution, solute का कितना grams present है? That is what is percentage weight by volume. The weight of solute present per 100 ml of solution. The grams of solute present per 100 ml solution is the percentage weight by volume. It's calculated as mass or weight of solute in grams upon volume of solution in milliliters into 100.
There is one more percentage which we define, which is normally used for a solution of a liquid in liquid. Next is percentage volume by volume. V upon V. It is the volume of solute in ml per 100 ml of solution. Or it is the volume percentage of solute in solution. Percentage by volume of solute present in the solution. Present in a solution. An important point is generally percentage volume by volume is used only for a liquid solution. You write this point. Percentage volume by volume is used mainly for a solution of a liquid in another liquid. Okay. Example, alcohol in water. If we have a 10% ethanol solution, 10% ethanol aqueous solution means that there is 10 ml of ethanol is added to prepare 100 ml of solution. आ रहा है समझ में? Other than liquid mixtures, if we talk about percentages और weight by weight या weight by volume या volume by volume कुछ भी specified नहीं है, तो percentage is always taken as percentage weight by weight. Okay. This is an important point. We'll write this point. Unless otherwise specified, percentage is taken as percentage weight by weight. Only for a liquid mixture, percentage is taken as percentage weight by percentage volume by volume. जैसे एग्जांपल देखो 40% NaOH solution. What does it mean? It means that it is 40% weight by weight NaOH solution. Clear है ये?
तो यहाँ पे परसेंटेज के आगे कुछ भी लिखा नहीं है कि 40% NaOH इज 40% वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. बाय डिफॉल्ट conventionally percentage refers to percentage weight by weight. Okay. Weight by volume and grams per liter strength are very much related. The relation between percentage weight by volume, grams per liter strength and molarity. Grams per liter strength is mass in 1 liter. Weight by volume is mass in 100 ml. Okay. So we can say that percentage weight by volume multiplied by 10 will give the value of grams per liter strength. Which is equal to molarity into molar mass of solute. Or we can say that percentage weight by volume into 10 is equal to molarity into molar mass of solute. This is the relation between weight by volume and grams per liter, weight by volume and molarity. एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो. 40 grams of 40% NaOH solution was mixed with 60 grams of 60% NaOH solution. Find percentage of NaOH in the mixture. Forty grams of 40% NaOH solution was mixed with 60 grams of 60% NaOH solution. Find the percentage of NaOH in the mixture. करो try करो ये question. We'll take a break after this.
52% is the correct answer. बहुत ही आसान है. 40 grams solution 1. इसमें mass of NaOH कितना आ जाएगा? 40 का 40%. 40 into 40% is equal to 16 grams. 60 grams solution 2. इसमें mass of NaOH कितना आ जाएगा? 60 का 60% is equal to 36 grams. ठीक है. अभी टोटल मास कैलकुलेट करेंगे. Mass of NaOH total is equal to 16 plus 36 is equal to 52 grams. Mass of solution total is equal to 40 plus 60 is equal to 100 grams. The percentage of NaOH is equal to 52 by 100 into 100. 52%. Clear है ये? Is this clear to everyone? 52%. Okay. Let us take a break. We'll continue at 10 a.m. Okay. We'll do two more concentration terms, molality and mole fraction, and then we'll do questions related to this. Chalo, thank you everyone.